Aziz Talaba Talibat, ladies and gentlemen, my dear students, my dear knowledge workers, my dear knowledge professionals, my dear knowledge seekers, let me welcome you to session number 4. And while I welcome you, I think by now you are developing and understanding the kind of world you are going to face 5 to 10 years from now. And then maybe you would like to perceive ahead of time. Use your knowledge at the personal level and maybe take some notes from this class and the books and the internet and the markets around. फिर उसके अलावा वो customers, वो colleagues, दूसरे knowledge workers in Pakistan, around the globe, which should give you maybe some data, maybe some information, but at the end of the day, the quality is that what is the level of quality of the knowledge which you have up here in your brain. That is what will give you the competitive edge. चलिए ये कहानी तो चलती रहेगी और कहानी का लफ्ज यूज करते हुए let me share with you a technique which is very often used by knowledge professionals. उस कहानी, उस टेक्निक का बल्कि नाम ही ये है स्टोरी टेलिंग. That you present your story, personal story, customer story, organizational story. स्टोरी तो हर जगह होती है. But you tell the story in such a way that you transfer the concept. Maybe you take some idea or you give some idea. And then, while you exchange the idea, there might be some customer who would like to give you some dollar or rupee or money. Exchange. And then on the basis of this quality of the knowledge which you have, how are you going to raise the productivity of the organization, of the office, of the family, of the place where you work? And certainly, that should give you an advantage. And once again, advantage at the personal level, at the professional level, at the market level, at the product level, at the service level, at the organizational level, at the global level. Depend करता है कि खूब से खूब तर की तलाश में आपका बेंचमार्क, आपका स्टैंडर्ड क्या है. तो जरा जल्दी से फिर बताइए कि मैंने पिछले सेशन में आपसे कुछ शेयर किया था कि what are those global trends which are emerging, which are not in my control to stop, and I'm sure it is not in your control to stop them. बल्कि हम स्टॉप करने की और कंट्रोल करने की तो बात ही नहीं करते. हम बात ये करते हैं how to ride on the tide, how to sit on it and drive it, how to have a good ride, that the world looks beautiful, that it brings advantage to you and to your company. So those 3 trends at least, वैसे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपके साथ शेयर किए, लेकिन 3 मेगा ट्रेंड्स की मैंने बात की थी. नंबर 1, जो पाकिस्तान में भी आपको नजर आ रहे हैं, अगरचे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बल्कि इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी भी नहीं हुई, होगी इंशाल्लाह. Remember I showed you and shared with you some data in numbers. कौन सा डेटा था वो? Data on population and data on land. And then I shared with you the data between 2 countries. कौन सी थी भला वो? रिकॉल कीजिए. उनमें से तो एक वो कंपनी है कि जिनकी बसें पाकिस्तान में, believe me, they have really set a new model in the transportation sector. कराची का मुझे नहीं इल्म, लेकिन लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान उन्होंने अपनी सर्विस शुरू की थी. They came up with a new model. Nobody knew in Pakistan
कि during bus travel on the road, there could be a nice way of traveling. There could be a nice way of having snacks on the board. And just like air hostess, there could be a ground staff besides the driver. But it's a beautiful, successful model. Others to follow. I wish people among you who might be working as a logistic manager, transportation manager, it's a big sector in Pakistan. And you bring an advantage, a competitive advantage. Add your value, add your innovation, add your idea. Good for you, good for the travelers, good for the market, good for the whole transportation. Brings higher return on the investment. Believe me. From one sector, rather from one route, they have expanded their routes to many cities, at least of Punjab. They are going to Frontier Province. And maybe, who knows, they might have a plan to go to Karachi and to Balochistan Province. Chaliye, वापस आइए, let's go to the globe. मैंने कहा था, what are those 3 trends which are shared with you on the globe? Number 1, networking. Networks. Information technology and the communication technology. Its performance. How can you process and send and receive the data through PC, through laptop, through palm top, through PDAs, and even now through mobile phones. आज से 5 साल पहले मुझे पूछने का मौका दीजिए, आज से 5 साल पहले कितने लोग थे जो SMS यूज करते थे? Only 5 years ago. How many? Can you count them on number? How about now? And what is the data which is being traveling on SMS? Data in text, data in numbers. And you wait, what about MMS? You will be receiving, maybe you are already receiving, and of course that facility is there by certain providers. Videos and images and graphics, movies, TV. That's why I'm saying that the information and the data which is being processed at a much faster rate, that the networks and the providers and the hardware providers, all of them, they have to get together. But the market is global. Market is liberal. Market is deregulated. क्या मतलब इसका? Government का कोई control ही नहीं है उसमें. Consumers are deciding. You and me, customers are deciding. कौन सी सिम लेनी है, एक लेनी है कि 2 लेनी है? किसका पैकेज बेहतर है? फरवरी में कौन सा पैकेज है और मार्च में कौन सा लेना है मैंने? And how about the prices? So my dear students, the idea is, I don't want to sacrifice the quality. Quality should not be sacrificed. But yes, the price should be reduced. There should be less burden on the pocket. तो आप मुझे बताइए फिर, सप्लायर या मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर जो है, पावर उसके पास है मार्केट की, या पावर कंज्यूमर और कस्टमर के पास है? You think about it. Second trend, along with the network, is the availability of information and knowledge through the websites, through the databases. For example, you need some data on the human gene. Sitting in Pakistan. पाकिस्तान में तो अभी जीन की एनालिसिस नहीं हो रही, डीएनए टेस्ट तो शुरू हो गया. जीन की एनालिसिस, ह्यूमन जीन का डेटा नहीं है. इट्स अ ह्यूज डेटा. But believe me, it's available, free of cost. There are certain databases which will be providing this data.
आप कहेंगे जी मैंने उस डेटा को क्या करना है? Remember I talked about biotechnology? Well, the biotech firms, highly knowledge-based firms. Very tough competition. Pharmaceutical section. How you can improve the drug design. You have a model of the drug and you have the information of the gene. Remember, the drug is ultimately going to interact at the cellular level in the body. Smart is the person, smart is the manager, smart is the chemist or the biochemist or the doctor. And how about nurses? क्या nurses knowledge worker नहीं होंगी? क्या हमने definition की थी? Who can read, who can write, who can use computer, who can be using her or his analytical skills. 4-5 attribute तो होने चाहिए. So this huge amounts of information and knowledge. अब आप कहेंगे जी एक तरफ तो मैं कह रहा हूं knowledge appear in the head और फिर knowledge कुछ वेबसाइट पे. We'll talk about that. कि किस किस किस्म के knowledge हैं और किस knowledge की कितनी value है. But this is available. You have the data available on website, how many educated people, matric level, inter level, primary level, women, men, 5,000 इनकम वाले, 20,000 इनकम वाले, 5,000 से कम इनकम वाले, शहरों में रहने वाले, देहातों में रहने वाले. आप मुझे बताइए आज से 10 साल पहले कहां ये चीजें अवेलेबल थी? तो क्वेश्चन ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि व्हेन ऑल दीज इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू, can you get an advantage, unique, comparative to your colleague, to another organization? That is what we are learning. How to use knowledge, how to manage knowledge, how to deploy knowledge, how to apply knowledge, how to deliver knowledge, how to reuse knowledge. मैं कॉपी की बात नहीं कर रहा हूं, reuse of knowledge. And of course, at the end of the day, how to innovate something new. And then, of course, speaking of the organization, how can we develop those systems? तो तीसरा ट्रेंड कौन सा था? हमने पहले बात की नेटवर्किंग, मेगा ट्रेंड. दूसरी बात की इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. तीसरा ट्रेंड कौन सा है? रिकॉल कीजिए, जहन में रखिए और हम इसको आगे लेके चलेंगे कि जब ये ट्रेंड हैं, मैं कुछ और आपके साथ डेटा शेयर करता हूं. You create your own information by looking at the data set A, data set B, data set C. लेकिन जो इंफॉर्मेशन फातिमा जनरेट करेगी वो अली की इंफॉर्मेशन से मुख्तलिफ होगी. जो अली जनरेट करेगा वो रशीद की इंफॉर्मेशन से मुख्तलिफ होगी. जो रशीद कंक्लूजन, इन्फर, डिडक्शन, इंडक्शन करेगा वो हमीद की इंफॉर्मेशन से मुख्तलिफ होगी. Because we have the processing capability, we have our background information different in all of us. That's where the unique advantage comes in. तो आइए फिर इस पर्सपेक्टिव में जब चेंजेस इस किस्म की आ रही हैं, मेगा ट्रेंड्स भी हमने कुछ देख लिए, तो फिर एज ए मैनेजर हमारी कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए? तो पहली कंसिडरेशन जो आपको ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए अब ये देखना होगा कि वो कंपनी का नॉलेज जो शाम को आप अपने बैग और पर्स में लेकर घर जा रहे हैं, मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, कस्टमर्स डेटा, कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन डेटा, ऑपरेशन प्लानिंग, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज which is in the bags, in the purses, or in the minds of the manager when they go home in the evening. देखिए इसीलिए बैग में आप कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी का प्लांट, कंपनी का इक्विपमेंट तो नहीं लेकर जा रहे, लेकिन यही तो हम लर्न करना चाह रहे हैं कि द टाइम हैज कम कि प्लांट ऑफ द कंपनी, वॉल्स ऑफ द कंपनी, बिल्डिंग ऑफ द कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, इक्विपमेंट ऑफ द कंपनी, yes, it is important, but
the knowledge. Which knowledge? Marketing plan, sales plan, customers' data, customers' loyalty. Which customers are bringing more revenue? Who is dealing with whom? Operational planning, logistic planning. It's all data and information, and maybe you can call it knowledge about the company, about the processes of the company. You go home in the evening, you take it along. So in a situation like this, if I'm the boss, how to make sure that you come back tomorrow and you don't take this away and sell it to some other competitor? हो सकता है या नहीं? हो तो सकता है. Designs are sold, और किसी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से पहले, किसी फैसिलिटी की लेआउट से पहले, किसी बिल्डिंग की आर्किटेक्चर, व्हाट इज इट? डिजाइन. People pay millions just for the design. And what is design? Nothing more than a sketch, first in the mind and then on paper. I keep it in my briefcase, take it away. How to keep the commitment of the knowledge worker attached to company A. First consideration. Second consideration, this company of mine is networked together with the globe. अगर नेटवर्क नहीं है तब भी एक चैलेंज है, इसलिए कि customers are demanding, what kind of processes are you using? Please show us. We like to benchmark. We like to give you orders. We don't care that the factory is in Sialkot. It's okay that if the factory is on Faisalabad Road, or in the site in Karachi, or in Hatar, and who knows where the Hatar is. And what are these industrial states in Pakistan? Many of them. Faisalabad mein, Multan mein, Lahore mein, Peshawar mein, Karachi mein, and new are coming up. We are not concerned. All what we are concerned is, can we get the information quick and fast? Can you receive the papers and the documents quick and fast? Those files attached. And when we send you the data, when we write you a letter, how quick we get the answer. And my dear student, 24 hours a day, 7 days a week. We need to be connected. Connected to the market, connected to the customer, connected to the employee. And that what raises the question, does your company have a portal, web presence or not? Ab to chote store, they would like to have their web presence. It's part of the game. Business is a game, and you have to play the way market is expecting you to do. This is one of the consideration for you as a manager, as a knowledge worker. Website nahi hai, how quickly you would like to show your presence on the web. इसलिए कि टेक्नोलॉजी के बगैर, और जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, immediately would come the network technology, communication technology. Number 3, not only the network, can you send your product through the optic fiber? Can you do business at the speed of the light, which is that you put your data, which can go and travel around the world 7 times in a second. Believe me, sometime I write an email to United States from Pakistan. Within no time, I get the answer back. This is how companies and customers and markets are interacting with each other. क्या आप कह सकते हैं कि जी नहीं, हम तो लोकली अपनी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, हमारी मार्केट लोकली है. ठीक है, आपकी मार्केट लोकल है, हमें इस पे कोई इतराज नहीं है. But can you stay isolated? Look at your consumers. Look at your customers. When they come and tell you that फलां स्टोर से, फलां कंपनी से, फलां मार्केट के अंदर फलां कंट्री का प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से सस्ता है, उसकी क्वालिटी बेहतर है. Consumer is more informed. Consumer is more connected. And when customer is more connected, you tell me, please,
Would you not like to be connected? Would you not like to be informed? Would you not like to be apprised? What are the changes going on around the world? And I'm sorry to say that the football industry in Sialkot, that's a challenge the managers of that company, those companies are facing. They, ahead of time, did not prepare themselves how the technology is changing. What happened then? Well, a lot of business have gone out of Pakistan to a country very near to us, in Asia. Business has not gone to Europe or North America. Wahan se to business aa raha hai. But the orders will go where the resources, better resources, cheaper resources, better technology resources would be. अच्छा, जब orders ही चले गए, और फिर उसके बाद अगर आप अपनी आंखें खोलेंगे, तो फिर knowledgeable तो ना कहलाए. इस कोर्स का पर्पस ये है कि you're looking at the data around the world, on the website of the company, of the competitor, in the region, you forecast for the future. Have an analytical mind. क्या ट्रेंड है, कैसे आपको अपनी कंपनी को प्रिपेयर करना है. देखिए, when the company goes out of job, I'm sorry, you are also out of job. ये सब एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है. आप कहेंगे जी कि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, वो बात नहीं सुनते. आई एग्री विद यू, बात सुनेंगे. दैट इज व्हाट द ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड इज. स्टील के बर्तन थाईलैंड से आ जाएंगे, गुजरांवाला वालों को सोचना पड़ेगा. आलू और प्याज कहीं से आ जाएंगे, पंजाब और सिंध के फार्मर्स को सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा. सीमेंट और शुगर कहीं से आ जाएगा. आप कहेंगे जी हम तो वेल ऑफ थे. होंगे आप वेल ऑफ. कंज्यूमर इज आस्किंग, वी नीड टू हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइस. एक और बात मैं आपसे अर्ज करके फिर आगे चलता हूं. Sometime consumers get together. Remember I talked about community? Consumers develop a community. हम ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जब तक इतने का नहीं बिकेगा. अभी लेटेस्ट अखबारात में पढ़िए आप. It can happen on the globe. It can happen at the local level. एक चेन स्टोर है. ये तो 3-4 साल पुरानी बात हो गई. हमने समझा था ये सिर्फ अमेरिका में ही होता है, पाकिस्तान में नहीं होगा. पाकिस्तान का अमेरिका का एक बड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड चेन स्टोर. A lady went to the store. She was mistreated, misbehaved by a manager. She went home. She wrote an email to whom it may concern, consumers and the customers of store ABC. नाम नहीं लेता हूं मैं उसका. Is there anyone, customer, who can raise their voice? Within half an hour, there were hundreds of emails going to the chief executive of the chain store. He has to come, apologize, ask the manager of that particular store far away, go and call her, apologize. That is the consumer power. We'll talk about more about that. Consumers are going to force. मैंने कहा था ना, मुझे 10 रुपए की क्रीम की शीशी चाहिए, क्रीम की क्वालिटी वही होगी. मुझे 3 रुपए का साशे चाहिए, शैम्पू की क्वालिटी वही होगी जो 200 रुपए की बोतल में थी. हाउ अबाउट स्विस वॉचेस? आप कहेंगे स्विस वॉचेस? यस, स्विस वॉचेस. People like you who are in the 20s and 30s, their managers decided that we see a trend around the world. What is that trend? A fashion trend. और फैशन क्या है? It's all design. ट्रेंड ये है कि those managers who just graduate with an MBA or MS and join a company, maybe a multinational company, I think, ladies and gentlemen, both of them, they prefer कि वॉच तो वही हो, स्ट्रैप उसका चेंज हो जाए. A strap for Monday, a strap for Tuesday, a strap for Thursday and Friday. It looks as if you have every day a new watch. Same company,
For teenager, perfume is different. Same brand. Teenager, perfume is different. 20s, the perfume is different. Ladies, the perfume is different. Gents, the perfume is different. 3, 4, 5 varieties of perfume. Same brand. That is, my dear students, the trend. And the consumers are forcing the companies to listen to them. अच्छा, कौन उनको? सिर्फ बॉस तो लिसन नहीं करता ना. सिर्फ इन्वेस्टर और कंपनी का मालिक या सेठ साहब तो लिसन नहीं करते ना. अब तो सेठ साहब को भी सुनना पड़ रहा है. सेठ साहब is also well connected. That's a management style. We'll talk about the management style. Things are changing and changing towards the favor and in the favor of, number one, a knowledgeable consumer and a knowledgeable worker, manager. Next point for consideration, very important point. In one hand, you hold the company. Uska infrastructure. Look on the second hand. You are holding the financial capital. Isliye ke financial capital, remember we learned balance scorecard, we talked about it. It's a way of measuring the performance of the processes of a company. Financial performance humne learn kiya tha is based on how customers are satisfied, how customers are loyal. Do you listen to them? Data, voice data. Do you respond to their emails quickly? Do you talk to them on phone? Do you call them on phone? कितनी फोन कॉलें अब आने लगी हैं बैंकों से, हॉस्पिटल से, बहुत सारी कंपनियों से और आएंगी. और अभी तो आप इंतजार कीजिए, इंटरनेशनल कॉलें आएंगी. टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग चीपर. वॉइस डेटा के साथ साथ टेक्स्ट और नंबर का डेटा. देखिए कितना आपके पास मोबाइल फोन पे आ रहा है. वॉइस डेटा तो ठीक है, टेलीफोन आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं 50, 60, 70, 100 सालों से. There is more text and number data which is coming through the mobile phone along with the voice. And then you wait until you get a phone based on internet protocol, VoIP. Things will get more cheaper. So in this scenario, who is holding the company? Infrastructure. मैंने कहा था ना, company's policies, company's strategic plan, company's marketing plan, company's customers' data. Who deals with them? Chief executive to deal nahi karta. These are the managers, people like you, who are responsible for the financial capital. And then, notice the plan are in your hand. How excellent plan you make, how excellent analysis you make of the market. And are you well connected? Are you processing the information? Company is providing you that information. It is all in the hands of the managers. C-level manager, B-level manager, frontline manager. And of course, all this information, you take it to the home. That's how the world is. That's how the OECD countries are. OECD. अपने आप को अपडेट कीजिएगा. What are those countries? Developing countries. Organization for Economic Development. Organization for Economic Cooperation and Development. OECD. Developing countries. They have made an organization. How to work in the information and knowledge economy. And notice this trend. A consideration. अच्छा देखिए, कोई जबरदस्ती तो नहीं है. अगर आप इसको कंसिडरेशन, आप इसको नहीं कंसिडर करना चाहते इस ट्रेंड को, well fine, that's up to you. The workers, the managers, supervisors, knowledgeable people. Remember, knowledge workers. कौन है? Who can read and write, they know their process, they can improve the process, who can use the technology and have an analytical skill. They would like to have socialization. They would like to sit face to face. They would like to develop what is known in knowledge management, a community of interest, a community of practice. Engineer is comfortable with engineer. Marketeer is comfortable with marketeer. An operational manager is comfortable with the operation manager. Let them speak. कहते ये हैं कि सबसे ज्यादा गुफ्तगू जो है कंपनी के वाटर कूलर के पास होती है. पानी पीने आए, हाँ जी बॉस कैसा चल रहा है, हाँ जी आजकल कंपनी की सेल कैसी जा रही है, हाँ जी आपके फ्लोर पे
ऑपरेशन कैसी हो रही है, परफॉर्मेंस, 2 4 5 इंफॉर्मेशन चाय के कप पे बैठे हुए कैफेटेरिया में वाटर कूलर के पास शेयर हो जाती है. Knowledge workers share their information, give their feedback. They talk about the company. They talk about the boss. They talk about the behavior. They talk about the customers. They share. अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि उस नॉलेज को जो शेयर किया जा रहा है, how can you use that for the advantage of the company? Please notice this slide. How the trend is changing. Look at the number of knowledge workers and their number is increasing. पाकिस्तान में भी इंक्रीज करेगा. ये एक डेवलपिंग कंट्री का डेटा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं. सी हाउ द फार्म वर्कर्स हैव गॉन डाउन. 3% ऑफ द पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स वर्क ऑन फार्म एंड दे ग्रो सो मच फूड इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द होल वर्ल्ड. उनको कहा जाता है ग्रो ना करें. 3% ओनली. नोटिस नाउ द नंबर ऑफ नॉलेज वर्कर्स and the increase in that. So in a situation like this, when the service industries are coming up, when the creative industries are coming up, last time मैंने उसकी भी बात की और मैंने आपसे कहा था सोचिए जरा कौन सी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर. आपने नोट किया होगा कितने टीवी चैनल्स ओपन हो गए, लोग नहीं मिल रहे हैं. एक जमाने में तो सिर्फ पीटीवी होता था, अब तो पीटीवी के भी अपने कितने चैनल हैं. एंड हाउ अबाउट वर्चुअल यूनिवर्सिटी? एट लीस्ट वी गॉट 4 चैनल्स राइट नाउ, मोर विल बी कमिंग अप. Companies are getting ready to share their knowledge and expertise with you and in return, get return on the investment. So my dear students, my dear knowledge workers, my dear knowledge professionals, you need to learn how to deploy what you know and how to learn something new so that you can be a successful person, a successful manager in the knowledge-based economy. Take a look on this, how the trend is changing in Asia versus the OECD countries, developing countries. हम रीजनल फोकस हो गए, क्यों ना हो. मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने भी पढ़ा होगा, NAFTA, नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन, EU, यूरोपियन यूनियन, 15, 20, 25, 30 कंट्रीज डेवलपिंग वन मार्केट. ASEAN, Asian countries getting together, having a common market, regional trade, bilateral relations, opening up borders. How about SAARC? And the countries are trying to become member of one region and the other and the other and a third and a fourth. Eco countries. आप कहेंगे जी ये eco, think about it. This is a new association of countries, eco. Economic Cooperation Organization. इसमें कौन से ममालिक हैं? 10 ममालिक हैं. मैं सबके नाम नहीं लेता हूं, कुछ नाम लेता हूं, बाकी आप ऐड करें. एंड वॉच आउट, इस रीजन के अंदर जो कंट्रीज हैं, दे आर ट्राइंग टू डेवलप ए कॉमन मार्केट. दे आर शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन, sometime at the prime minister level, sometime at the commerce minister level, sometime at the foreign minister level, so that industries and the markets, they can join hands together, face the world. Eco countries, Pakistan, Afghanistan, Iran, Turkey. 4 हो गई. All the remaining 6 are the Central Asian countries. Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, बाकी आप नाम लें. So when this trend is coming up, is there an opportunity for you? Certainly. Those of you who are MBA, those of you who are masters in sociology, those of you masters in information technology, new companies, new mergers, new acquisitions, trends are opening up, markets are opening up, jobs are opening up. यहां मैं आपसे जो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूं, please take a look on the population in the less developed regions versus the developed region. See the difference. Less developed region के अंदर मेल और फीमेल दोनों का डेटा आपको दिया हुआ है. 15 से 19 साल के लोग कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है, 30 से 34 साल, 45 to 49 years old. क्यों ये इतना डिटेल में डेटा क्यों? मैं भी आपसे शेयर कर रहा था ना कि कंपनीज आर ट्राइंग टू लुक what product is required for teenager, what consumers of the age of 30s are demanding, which may be different than 60s. Customer segmentation
customer focus, give them something which they really want. Remember, I shared with you an example, a textile company in Pakistan, in Faisalabad. We are proud of that company. आज से 20 साल पहले उन्होंने, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ने, on the basis of his experience. अच्छा, experience क्या होता है? ये भी knowledge है? Think about it. We'll talk about it. उसने ये infer किया, perceive किया, intuition. Intuition क्या होता है? ये भी knowledge होता है? Think about it. और आपने मैनेजमेंट के कोर्स में, बेसिक मैनेजमेंट के कोर्स में पढ़ा होगा कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, सी लेवल मैनेजर, उसका तो सारा टाइम कंसेप्चुअल सोचने, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, इंट्यूशन, 100%, 90% ऑफ द टाइम ही मस्ट हैव द कंसेप्चुअल स्किल. उसने ये सोचा, ये पाकिस्तानी टेक्सटाइल, कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सास के लिए मदर इन लॉ कुछ और कलर की लॉन हो. लेट्स से वी स्पीक अबाउट द लॉन. वैसे तो और बहुत सारी चीजें भी वो बनाते हैं. मदर इन लॉ के लिए कुछ और कलर की लॉन हो, वहां जो बेटी रहती है उसके लिए कुछ और कलर की लॉन हो, और जो बहू रहती है उसके लिए कुछ और कलर की लॉन हो, और जो वहां पर टीनेजर हो उसके लिए कुछ और कलर की लॉन. सेम फैब्रिक, सेम प्राइस, बट डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिफरेंट डिजाइन्स. आप मुझे बताइए, क्या सेल 4 टाइम नहीं होगी? क्या घर की बहू और उसकी सास डिफरेंट कलर का कपड़ा पसंद नहीं करती? आप में से जो फीमेल है, यस, यू आर ओपनिंग अ न्यू मार्केट. योर सेल इज गोइंग अप. यू आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर योर एडवांटेज. इसलिए कि आपका जो कंपटीटर है उसने तो ये सोचा ही नहीं. सो प्लीज think about it, how the age of the consumer, how the gender of the consumer, male and female, especially in the Asian region, especially in the less developed region, this is the data. How are you going to exploit that market? And notice then on the other side, in the developed regions, वहां पर age, number और gender कि गेम कुछ और है. वहां पर फिर मैं बस ये कहकर आगे चलता हूं. नोट कीजिएगा कि सिंगापुर और जापान में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे अब, कि जो इलेक्ट्रॉनिक मसाजर, ऐसी कुर्सी जिसमें बैठकर वो टांगों की और कमर की मसाज वो कुर्सी करती है. अब तो पाकिस्तान में भी मैंने कुछ स्टोर्स में देखी. लेकिन 96, 97, I saw it in Singapore, but the company is Japanese. Because notice, take a look. The people in 50s and 60s are more in number. People in 70s, quite good in number as compared to teenager. इसलिए कि ये बाजू का मसाज और कमर का मसाज और टांगों का मसाज, this is an issue and a problem of the 50s and 60s and 70s. Population ज्यादा हो गई ना. They came up with an intelligent product focused to a particular segment of the market. That is where you use the knowledge and information, transform this into a product, an innovative product, which is requirement of the market. Look at the markets now. It's like a market is the one where you're going to sell your product. ठीक है, प्रोडक्ट की मार्केट तो आपको पता ही है, ट्रेडिशनल मौजूद है. गुड्स और सर्विसेज की तो सब जानते हैं. सॉफ्टवेयर सिस्टम की भी मार्केट है, ह्यूज मार्केट ना, वेरी टफ कंपटीशन. सीआरएम के सिस्टम्स, सप्लाई चेन के सिस्टम्स, बिजनेस इंटेलिजेंस के सिस्टम्स, वर्ड प्रोसेसर्स, ओपन सोर्स वर्सेस क्लोज सोर्स. आप में से जो आईटी के स्टूडेंट है वो मेरी बात को समझ रहे होंगे. वुड यू लाइक टू गो फॉर ओपन सोर्स सिस्टम, और वुड यू लाइक टू गो फॉर a licensed system? And then resource markets, natural resources, labor resources, capital resources, HR resources. वो कहते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर किसी जमाने में, आज से कोई मेरा ख्याल है 100 साल पहले, मैंने लास्ट टाइम भी शायद ये बात की थी,
It was in Massachusetts. It moved to the south of United States towards Georgia and Atlanta, Philadelphia, because the labor was cheap there in the south. The north became knowledge-rich. Cambridge is a knowledge-rich city. So is the Boston. Many good hospitals in that city, best universities in that city, best in the world. Okay, fine. Then the textile industry moved from there. It came to Asia and South America. Then within Asia, it moved some of it from Pakistan to Bangladesh. Many Pakistani investors have come up with their factories in Bangladesh, in Sri Lanka. So my dear students, the factories, industries, manufacturing resources would go, the markets will be where things will be cheap. Capital का मैंने लफ्ज यहां पे लिखा है. Think about the Singapore. It's the capital in the financial market of the world. Analyze कीजिए जो मैं बात कह रहा हूं. Investor market. क्या ये भी कोई market है? Are there some more rich members in the family who might be willing to give you some investment? Someone in the friends? Of course, in the stock exchange. Look at the competency market and the social market. And all of them have the value. And they require a related type of knowledge to work in that market. Let's look at some non-traditional markets. Cause marketing. अब आप मुझे बताइए कि cause marketing के लिए you have to present the cause of a particular organization. We like to raise some money for a friend who have been diagnosed with cancer. A cause. And you will see how friends and the family members get together, use the technology, send an email, use the advertising, come up with brochure, they serve the cause. Information goes around and you will find some donors. And in Pakistan, I think Pakistan is a country, we are proud of it. Look at the cancer hospitals. Look at the eye hospitals. Look at the heart surgery hospitals. Look at the schools. One of the best resources available, one of the best facilities available, free of cost. How can you do that? ये एक अलग कहानी है, ये एक अलग बिजनेस मॉडल है. आप उनसे पूछ के देखिए, वो आपको बताएंगे. लेकिन उसके पीछे कुछ नॉलेज बेस्ड मार्केटिंग हो रही है. फ्रेंड्स हेल्पिंग फ्रेंड्स. इवेंट मार्केटिंग, ये एक बिग बिजनेस बन चुका है. Look at the business which is being attracted in Karachi Expo. And how about those annual melas? How many people are attracted there? If you are a good marketeer, use that information. Just like exhibition, इसलिए कि देखिए, at the end of the day, revenue generation, profit generation, customer service is the objective of the company. And this is how you earn the revenue. Organizations marketing and persons marketing. How are you going to present the organization in the market that the organization's brand is well known and the organization's brand get a better equity? Product की marketing तो होती ही होती है. How can you develop the brand of a particular organization? Think about those organizations which spends billions of dollars for their organization's marketing. Of course, certainly, they provide certain services and products. Last देखिए place marketing. आपने ads देखी होंगी मलेशिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, कई और मुल्कों के बारे में. They try to present the country as a tourist attraction. आपने hospitals के बारे में देखा होगा. अखबारात में ad आती हैं कि we have the best hospital in this country and we provide these services. And look at all these universities which are coming almost every week to Pakistan.
यानी एक वक्त होता था कि स्टूडेंट उन यूनिवर्सिटियों को लिखा करते थे. नाउ द यूनिवर्सिटीज आर कमिंग टू यू एंड प्रेजेंटिंग a brochure, a presentation, the full package, knowledge full package. So your information is updated and in return फिर क्या होता है? You buy their service, you buy their knowledge package and you pay the money. So the return on investment, the financial gain is certainly part of the business gain. One more aspect I like to share with you, how the trends are changing at the global level. हमने कहा था ना कि कंपनीज आर ट्राइंग टू बिकम मोर नॉलेजेबल अबाउट देयर कंज्यूमर्स. अच्छा, जब हम कंपनीज की बात करते हैं तो बेसिकली आप ही लोगों की बात हो रही है, मैनेजर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी तो दीवारों का नाम तो नहीं है. शुरू में तो वो देखना चाह रहे थे कि कंज्यूमर्स की चॉइस क्या है. आपने कहा कि ओके, टीनेजर्स वर्सेस 20s वर्सेस 30s वर्सेस 50s. गुड. लुक एट दिस ट्रेंड, फोर्टिफिकेशन वर्सेस यूनिवर्सलाइजेशन. पीपल हैव, फोर्टिफिकेशन का मतलब यह है लोकल, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है ग्लोबल. ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड, टेक अ लुक ऑन द कंज्यूमर्स हु हैव लोकल बिहेवियर बट द यूनिवर्सल वैल्यू. थिंक अबाउट इट. लोकल बिहेवियर, नेशनल बिहेवियर. क्या मतलब? दे वुड लाइक टू लिसन टू ए लोकल सॉन्ग, दे वुड लाइक टू लिसन टू ए लोकल स्पीकर, दे वुड लाइक टू गो टू ए लोकल यूनिवर्सिटी. लोकल बिहेवियर. But at the same time, they would like to get the service which should be of the global level. So a Pakistani service, local behavior. A Pakistani service, a Pakistani singer, a Pakistani product, but of a global quality. Value. Global quality. क्या ख्याल है? ऐसा होता है? ऐसे कंज्यूमर है? And then, on the right hand side, global behavior, but local values. I would like to buy only that mobile phone which should be made one of the best company, global behavior. But then I would like to see that this global company which is giving me the mobile phone should at a given time 5 times a day इसमें से मुझे अजान की आवाज आनी चाहिए. Local value. ऐसी कंपनियां हैं. मुझे ये मोबाइल फोन चाहिए, मुझे ये वेब सर्विस चाहिए, लेकिन एट ए गिवन टाइम मुझे ये लोकल नेशनल वैल्यू. एंड देन ए थर्ड टाइप ऑफ कंज्यूमर हु हैव अ लोकल बिहेवियर एंड अ लोकल वैल्यू. आई वुड लाइक टू गो विद अ नेशनल कंपनी एंड आई कैन लिव विद द नेशनल स्टैंडर्ड्स. और चौथे टाइप के कंज्यूमर है कि साहब नहीं, आई एम लिविंग इन खानेवाल, आई एम लिविंग इन पत्तोकी, आई एम लिविंग इन सांगड़, आई एम लिविंग इन कलात, I'm living in Gwadar, but I want to be connected with the world. My behavior is global. I would like to get those products which are global. पानी हो तो वो भी फ्रांस का, परफ्यूम हो तो वो भी फ्रांस की, यूनिवर्सिटी हो तो वो भी फ्रांस की, और जो एंटीक मैं खरीदूं वो भी फ्रांस की. These are the type of consumers. And there are companies who are providing these services. You have to be knowledgeable about the consumer. Give him what he wants, what she wants. You will be well connected. इसीलिए अब कंपनीज के अंदर अकाउंट्स एग्जेक्टिव. क्या मतलब इसका? कभी सुना आपने ये नाम? अकाउंट एग्जेक्टिव का मतलब ये है कि साहब ये मिस्टर एबीसी हैं, ये कंपनी एबीसी हैं. इस कंपनी को डील करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक मैनेजर, बस ये इसी कंपनी को डील करेगा, या उसको 2-3 अकाउंट्स दे दिए, इसलिए कि वी गेट 50% ऑफ द रेवेन्यू ओनली फ्रॉम दिस कंपनी. तो देखिए, आपकी कंपनी तो फिर उसी के बारे में कोशिश करेगी ना कि नॉलेजेबल हो, उनकी वांट्स के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में, उनकी डिजायर्स के बारे में. आज से 10 साल पहले कितने लोग थे कि जो इंपॉर्टेंस इस हद तक डिटेल्स. अच्छा, डिटेल्स क्या होती हैं? डेटा अबाउट द कस्टमर, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर. So much in detail? Yes. Because at the end of the day, you would like to give him a product or a service that the customer would never go anywhere and would like to buy your product. So my dear students, speaking of the customers then, let's call them a net generation customers. Who are they? Born after 1970s, age 20s,
Think about them. मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप भी कस्टमर बन सकते हैं, but those customers who are in their 20s, what do they demand? How do they behave? Well, they know no border. बासमती राइस चाहे उनको सिंगापुर से मिल जाए, दुबई से मिल जाए, अकबरी मंडी से मिल जाए या बोल्टन मार्केट से मिल जाए, they will go for the best. उनके लिए borders have no value. Who wants new technology based on services? मैंने कहा था ना कि बेस्ट मोबाइल फोन हो, सर्विस होनी चाहिए उसके अंदर कि मुझे वो रिमाइंड करा दे अजान का टाइम हो गया है, मुझे वो रिमाइंड करा दे मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, मुझे वो रिमाइंड करा दे एक नई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक नई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मुझे वो रिमाइंड करा दे 5 मुख्तलिफ किस्म की टोन्स हो, टोन से मुझे पता चल जाए कि मेरे फ्रेंड का फोन आया है या फैमिली मेंबर का फोन आया है, या मुझे ये फोन सुनना है या नहीं सुनना है, या ये कौन सा कस्टमर है जिसका फोन आया है. 5, 6, 7 डिफरेंट टोन्स, रिंग टोन्स. सर्विस है ना. Who demands quality products no matter from where they come. Next generation customers. सोचिए क्या मैं सही कह रहा हूं? एनालाइज कीजिए इस इंफॉर्मेशन को. These are the next generation customers who desire more value for less money. कैसे आप बनाएंगे, कंपनी कैसे बनाएगी, ये आपका हेडेक है, मेरा हेडेक नहीं. Who prefers local values but global behavior. And who will buy Pakistani products only with due respect to Pakistani companies. Who will buy Pakistani only if it will give value for its money, for his money, for her money. So how are we going to then work with these kind of customers and consumers? Well, you better be more knowledgeable. You better know more about them. And knowing about them and speaking of them, this means you should be well connected. You should be well informed. You should be at a regular time interval, go to him, speak to him, sit with him, share with him what you are doing for him and what new products are coming up and what new services are being provided and how can you serve the customers better and better. Because these consumers, these customers of the age 20s living in city or in villages, in Pakistan, believe me, इसलिए कि मैंने कहा था ना कि मोबाइल फोन तो अब ये नहीं रहा कि देहातों में नहीं है. अब तो एक कंपनी ऐसी आई है पाकिस्तान में, वो प्राइड इस बात की ले रही है कि हम जनाब सर्विस ही अपनी देहातों, हमने देहातों को फोकस किया है. So sitting and being in the village is no longer a barrier as long as you are knowledgeable. So this is a game of knowledge, my dear students, and this is the course on knowledge management. And certainly, we would like to see how can we manage knowledge for ourselves, personal capital, individual capital, and how can we manage this knowledge for the organizations, institutional capital, and how can we serve it better. Thank you very much for listening. Think about these ideas. We will continue on further, and we will see कि ये next generation customer तो हो गए, ये 20s की एज वाले knowledge workers, उनका behavior कैसा है. Next lecture तक इंतजार कीजिए. We will share with you so that you can put all these things together and come up with better products and services. Until then, Khuda Hafiz and goodbye.